সময় আগতে আপোনালোকে দেখিছে যে অসমৰ মহিলাসকলে এটা চৰকাৰী আমাৰ মঞ্চ এৰি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিছে, কাষ চাপিছে। তো ফ্লেগ লৈ আমাৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আৰু মহিলাসকলৰ মাজত বাধা দিব নোৱাৰে। আজি মহিলাই শিলডোল ভাঙি আজি যিদৰে আহিছে অসমৰ উজনি অসমত বিশেষকৈ যি আমি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি যে আৱেগ আৰু আজি যে আৰম্ভণিতে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নাম লৈ আমি সদায় শংকৰদেৱৰ আদৰ্শ পালন কৰি যে কামখিনি কৰিম সেয়া ৰাহুল আমাক চবে আমাক মনত চুই গৈছে। उसको दबाने की एक साजिश है ताकि लोग अपनी बातें मीडिया के सामने व्यक्त ना कर पाए, ताकि लोग खुले मन से अपनी जो समस्याएं हैं राहुल जी के सामने ना व्यक्त कर पाए। लोग यहाँ पे कहना चाहते हैं कि यहाँ पे युवा बेरोजगार है, निराश होकर विदेश जाते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, और यहाँ के जो मंत्री हैं शिक्षा या रोजगार देने के बजाय कीमती वो घड़ी कीमती गाड़ियों में वो उठते हैं बैठते हैं, और साथ ही साथ वो आज शिक्षा स्वास्थ्य का विभाग नहीं, कौन कोयला विभाग का जिम्मेवार है, कौन अवैध खनन का विभाग का जिम्मेवार है, कौन यहाँ पे सुपारी विभाग का जिम्मेवार है, कौन यहाँ पे ड्रग्स विभाग का चल रहा है। तो पूरी तरीके से एक सिंडिकेट की सरकार है और इसी सच्चाई को छुपाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप लोगों ने कुछ देर पहले सुना होगा या देखा होगा कि लोग ये सरकारी कार्यक्रम को छोड़ छाड़ के सब भूल के लोग रास्ते में राहुल जी के पास आए, निकट आए, उनको स्वागत किया और उनको बोल रहे हैं कि आप आइए, आप हमारे बीच में आइए। तो सरकार चाहे जितना भी कोशिश कर ले लोग और राहुल जी के बीच में बाधा डालने के लिए वो नहीं सफल हो पाएगा, क्योंकि लोग आज जुड़ चुके हैं। যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া যেতিয়া যোৰহাটত প্ৰৱেশ কৰিছে তেতিয়া অসম চৰকাৰে ৰাইজক ন্যায় কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। আমি ৰাস্তাত যেতিয়া চেক বিলাই আছিলে আত্মসহায়ক গোটবিলাকৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ, আমি সুধিছিলোঁ গোটবিলাকৰ মাননীয় মহিলাসকলক যে আপোনালোকে যে আজি পইচা দিছে আপোনালোকে কি ক'ব? কৈছে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আহিছে কাৰণে আমি এই পইচাটো পাইছোঁ, নহ'লে চৰকাৰে আমাৰ অসমৰ মহিলাক যোৰহাটৰ মহিলাক মৰিয়নিৰ মহিলাক পাহৰি গৈছিলে। কৈছে অল ক্ৰেডিট গোজ টু ৰাহুল গান্ধী ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰা। কাৰণ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া যোৰহাটত অহাৰ আগতে ইয়াৰ কোনো গোটলে কোনো মহিলালে বিজেপিৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ মনত পৰা নাছিলে। আজি যিমান টকা পাইছে অনলি বিকজ অফ ৰাহুল গান্ধী ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰা যোৰহাটৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত মানুহক ব্লক কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে ৰখা মহিলাই হাজাৰ হাজাৰ মহিলাই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক আশ্বাস দিয়াৰ কাৰণে পইচাটো ল'বলৈ আহিছোঁ। আপুনি বেয়া নাপাব, 100% ন্যায় অসমৰ মহিলাক আজি বিজেপিয়ে রাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰাৰ কাৰণে ন্যায় দিবলৈ বাধ্য হৈছে। যদি এখন আজ রাহুল গান্ধী তো 18 तारीखे जितना गुट के महिला है वो महिला गिला के हकाई के हमनी पंचायत में घेराव कर लेबो तबे हुआ महिला जमा नहीं होतो। इतना कांग्रेस जितना दुर्बल हो गए निकी हिमंत जितना पॉलिसी करूक किंतु वार पॉलिसी हमनी जानी ही और राज्य जाने आसाम के मानुषो जाने जे हमनी के की कर रहले सेटा कितना दलाल दलाल से मार रहले, कहाँ गुट के गिला के गाछपुली रख रूप लो, कहाँ कलसी ले लेके घुरलो। अरे वो माटी नहीं दे हमनी के, माटी के पटाटा नहीं दे हमनी के, अरे वो हुआ मुठा भर भर के माटी कलसी में ले है ओटा निकी कहाँ बोले की बना तो। अरे तो आसाम के हमनी के दुखिया बगान के मानुष के तो देना घर भेटी माटी घर टाके जनटा घर में थके है हमनी के मानुष ओ घर टाके पटाटा देनो। हमनी तोर बगान टाके नहीं खुजी ना, हमनी घर के पटाटा खुजी। घर के पटाटा जदि देले से हमनी के बहुत दिन से हमनी वो पटाटा के आँखा में रोई रोली। जदि भगवान करो जदि 24 में जदि कांग्रेस जाए जातो नहीं हमनी निश्चय घर भाड़ा घर तक कंपनी घर में हमनी ही जदि वो कंपनी माटी टाके जदि हमनी के पटा दे देतो ओ टाइम में हमनी के जोने मैनेजर बा जोने मालिक के उठाइले शक्ति नहीं हो। तो हमनी और हमनी के कत दिने बोलो का देबो बोल के ऐसे हमनी बुढ़ांगली अपन हिला देखाई रहले। अरे हमनी के जेर को नहीं हो এখন এসিএম से हमनी के हाजरा बढ़ाल এখন तो सरकारे बोल दे जे हमनी बढ़ाई। अरे এখন तो तनी हमनी 351 টাকা যদি तनी के हक सोच है तो हमनी 351 টাকাটা दे के देखनो हमनी कोनो नहीं खुजी। हमनी के बगान के मानुष हमें खाली बगान के मानुर कथा कोई सुदे तो अपन के देना हमनी के बगान के मानुष जोनटा खाइत के खा नहीं हमनी के अंतरटा कांदे है। हमनी के बगान के मानुष के की लगे
এখন 5 কেজি চাউল अरे वो चाउल तो हमनी के आगे भी सैकिया सार दे हेल न 2 টাকা কেজি में दे हेल আমাক 10,000 টাকাটো আমাক এতিয়া এটো এটা বাপৰ ঘৰৰ পইচা নেকি এই 10,000 টাকাটো এইফালে কেৰাচিন তেলৰ হাজিৰাটো তেলটো বঢ়াই লৈ পইচা লৈছে এইফালে দাইল তেলৰ পইচাটো বঢ়াই লৈছে এটো কাৰ পইচা দিছে আমাক এই 10,000 টাকা দিছে যে ৰাজ্যক দিছে এটো আমাৰ পইচা মাছৰ তেলত মাছ ভাজি আছে এই বিজেপি চৰকাৰে আপোনালোকে কি ভাবে আপোনালোক সব জানে কিন্তু আপোনালোকক এই কথাগিটা আমাক খুদে যে আপোনালোকে কি কব বুলি আমি হে কথাটো এক बीजेपी 1 नंबर दलाल हमर माई बहन सबके बोली बीजेपी के बात में हमनी के मानुष पागल नहीं होबी हमनी के कांग्रेस सरकार रहल तखन निजे भात 2 টাকা केजी चाउल केरासिन तेल 20 টাকা लीटर दे हले बा 15 টাকা लीटर दे हले दाल तक कितना तेल तक कितना ओगला तो हमनी जान रहली न এখন बीजेपी एक जनता कर देले जे भाजे हारा हमनी के हाड़े साड़े सब ले करे दिया 10,000 টাকাটো এইগিটা এহতৰ পলিসি হিমন্তৰ এটু পলিসি এটা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা ভাবে যে हमनी যদি বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ তথা অতি মৰমৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াদেৱ আহি আছে ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰাৰ কাৰণে গতিকে তেখেত ইতিমধ্যে মাছখোৱাত ৰেষ্ট লৈ আছে আৰু আমাৰ দেৱাপাৰ গাঁৱৰ স্থায়ী ৰাইজ অৰ্থাৎ পুৰুষ মহিলা সকলো ইয়াত আছে বৰ পৰিতাপৰ বিষয় আজি মহিলাসকলক আমাৰ মাজত নাই খুব কম আছে তেওঁলোকক আজি বিজেপি চৰকাৰে পঞ্চায়তত এখন ফৰ্ম দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোক তাত বিজি হৈ আছে আৰু যিমান দেখিছে আৰু ৰাইজ আছে আৰু আহি আছে আমাৰ মিটিঙতো বহুত ৰাইজ আছে আমি তেওঁৰ কাৰণে ইয়াত ইন্তজাৰ কৰি আছোঁ এবাৰ নিশ্চয় প্ৰভাৱ পৰিব কাৰণ বিজেপি চৰকাৰখনে যি আমাক সৰ্বসাধাৰণ গৰীব ৰাইজৰ প্ৰতি মাধমাৰ মাৰি আছে তাৰ কাৰণে সকলো ৰাইজ সজাগ হৈছে আৰু সকলো ৰাইজ একগোট হৈছে সকলোৱে একে সদল বলে আহি ওলাই আহিছে ৰাহুল গান্ধীক সাথ দিবৰ কাৰণে নিশ্চয় পৰিব ৰাহুল গান্ধী এবাৰ নিশ্চয় আমাৰ যিটো ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে তাত নিশ্চয় প্ৰভাৱ পৰিব আৰু এবাৰ লোকসভাত নিশ্চয় আমাৰ অসমৰ পৰাও আমি ভালদৰে ইয়াৰ ফলাফল ৰাইজৰ মাজত আগবঢ়াব পাৰিম